Okay. Hi everyone. Am I audible? And is the screen visible to everyone? Can anyone confirm in the chat? भाई जिन लोगों को भी स्क्रीन दिख रही हो, मेरी आवाज आ रही हो और मेरी शक्ल दिख रही हो, प्लीज चैट में क्या कंफर्म करेंगे. Let's start with the session. And does anyone wants to answer that? What do you think is the agenda for today? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, या what is the roadmap which we are going to discuss? We are going to discuss about basics of Java, as you can see. So first, I will introduce myself. My name is Archit Agarwal, as you can see on the screen also. I am a currently software engineer at Salesforce. I work as a backend engineer. मैं Salesforce नाम की एक कंपनी है जो कि एक एमएनसी कंपनी है, वहां पर एज अ बैकएंड इंजीनियर काम करता हूँ. एंड इन बैकएंड इंजीनियर आई बेसिकली वर्क ऑन जावा ओनली. आई वर्क ऑन जावा, स्प्रिंग बूट, पोस्टग्रेस डेटाबेस, APIs I design, and related stuff I usually do. So I think I will be eligible enough to give you some kind of motivation, some kind of roadmap that how you can start with Java. And also, I have been teaching in various edtechs when it comes to Geekster. I have been teaching in Geekster also since long, and I also provide content to other edtechs apart from Geekster. So I think today's session will be a very valuable session for everyone. Whatever questions you have, or whatever queries you have, just drop them in the chat, and I will be able to answer all of them. Is it clear to everyone? Is this session only for roadmap? No, we will also discuss about some features when it comes to Java. We will also discuss how we can get into DSA, how we can also start with the development in Java. So yeah, like most probably, or you can say mostly it will be based on what you can do and how you can do it. That also I will discuss. But you will have to start it after the session, or you can say you can get along with the same roadmap just right after the session is ended. Please start with basics from what is Java and then its use, etc. etc. Yes, great. Okay. So first of all, if I ask you a very simple question, can anyone tell me in the chat what is a programming language? A very simple question. मतलब आप लोग थोड़ा बहुत मे बी कोडिंग के बारे में जानते हो, मे बी थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हो. What do you think is a programming language? What is a programming language? Communication with computers is a programming language. Okay. The language which is used to design and run different programs. Okay. The language by which we can interact with computers. Okay. What else? What else do you think is a programming language? A vocabulary and a set of grammatical rules for instructing a computer or a computing device to perform specific tasks. So is the answer coming from ChatGPT? Anyways, so as all of you rightly mentioned, that programming language is just a language, but a language which is using computers or which is using some instructions from human to perform the instructions or to perform the output, to give the output. So if I let's say take an example of very simple application, which is calculator application. Can I say if we are running a calculator application, will it take some input? Will it process that input and will it give some output? क्या एक सिंपल सी कैलकुलेटर जैसी एप्लीकेशन कुछ इनपुट लेगी, उस इनपुट पर कुछ काम करेगी, कुछ प्रोसेसिंग करेगी, और फिर उस प्रोसेसिंग के बाद उसका कुछ आउटपुट देगी? A simple example is 1 plus 1. You will say it will process the data, it will take two numbers, it will have the operation which is plus, and it will give me the resultant 2. Similarly, even if you give very large numbers, if you give 172 into 363, anything, whatever the output will be, it will give you. So, whatever input you will give, if it is a valid input, it will do some processing inside that black box. आपको नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, but inside that something is happening. Some processing, some programming is happening. And once that programming happens, once that processing happens, we are able to get the output. So, can anyone tell me again in the chat who is giving this input, who is giving this output, who is getting this output? ये input कौन दे रहा है, ये output किसे मिल रहा है? Who is giving the input and who is getting the output? Users, programmers. User is giving the input. Correct. User also you can say, programmer also you can say. Mostly it will be user or customer. Whoever will be using the calculator, he will be giving the input and he will be getting the output. भाई जो calculator use करेगा उसी को input देना होगा और उसी को output मिलेगा. But who will be doing this processing? We know computer will do it. But how does computer know that it has to add 1 and 1 and give the output as 2? How to multiply 172 with 363?
डू वी नीड टू टेल कंप्यूटर दैट हाउ टू डू इट? क्या हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि भाई ये कैसे करना है? हाउ टू डू एडिशन, हाउ टू डू मल्टीप्लीकेशन, हाउ टू डू दिस प्रोसेसिंग? यस और नो? भाई कंप्यूटर इतना ज्ञानी तो है नहीं खुद से समझ लेगा। कंप्यूटर इज अ डम्ब सिस्टम। कंप्यूटर में अकल नहीं होती। ऑल्दो टुडे वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड एवरीथिंग which provides some, you can say, some intelligence to computer, but still computer can't uh, just have the input and just process it and give the output directly. It has to do some learning. अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की भी बात करें तो वहां पे भी हम थोड़ी बहुत लर्निंग करते हैं। वी टेक द डेटा सेट, वी प्रोसेस द डेटा सेट एंड वी गिव द आउटपुट. Example is chat gpt. In chat gpt there is a lot of, first of all, data set given to it, maybe wikipedia, maybe you can say a lot of websites are scrapped, and then we are able to get output whatever we will get input as. मतलब चैट जीपीटी में भी ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर इतना स्मार्ट हो चुका है कि आपने कुछ भी इनपुट दिया और उसने आउटपुट आपको सीधा सीधा रिप्लाई कर दिया। उसने भी बहुत सारा डेटा कंज्यूम किया, उसने भी बहुत सारी प्रोसेसिंग करी है पहले, फिर उसके बाद आप डेटा दे पा रहे हो। So whatever the type of computer we have, even including artificial intelligence, machine learning, data science, all of these cool stuff which you have learned or which you are listening, not learned, but listening, it will require processing, and processing will be explained, or processing will have to be told by us that how we need to do it. हमें कैसे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है वो तो हमें ही बताना पड़ेगा। हमें कौन? हु इज अस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, when we are giving the computer the instructions that how to perform the conversion of input output? हम कौन है इसमें? जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेसिंग समझा रहा है कंप्यूटर को, ये कौन करता है? नो, दिस इज नॉट यूजर। आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो क्या आप ये भी बता रहे हो कि कैसे कैलकुलेटर वर्क करेगा? आप वन दबाओगे, प्लस दबाओगे, वन दबाओगे, इक्वल टू दबाओगे तो फिर वो टू कैसे देगा? डू यू टेल कैलकुलेटर दिस ऑल्सो? नो। Can I say that the programming language, whatever we are going to choose, whatever code we are going to write, whatever instructions we are going to provide, the person who is writing the code will be responsible? जो भी ये कोड लिख रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा? यस और नो? जो भी ये आपको प्रोसेसिंग करने में हेल्प कर रहा है, यानी इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, वो ये सब कुछ बताएगा। एंड दैट पर्सन इज नोन एज अ प्रोग्रामर, दैट पर्सन इज नोन एज अ डेवलपर। तो what we aspire, or what most of you will aspire if you are going into the coding journey, is that you will try to become a programmer, you will try to become a software developer, you will try to become a general, you can say, developer, or simply a coder. Although there is a difference between a coder and a programmer, उसके बारे में भी आज डिस्कस कर लेंगे if time allows. But we want to become a coder, we want to become a programmer, we want to become a developer who will be writing the code, who will be developing the code, and the code will do what? Code will convert the input into output. So are there only one programming languages available in the today's world? क्या आपके पास एक ही तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब एक ही होती है सब चीजों में? कैलकुलेटर में भी, आपके क्रोम में भी, इन इवन इन योर डेस्कटॉप, इवन इन योर रेडियो, विल देयर बी सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड? ऑब्वियसली नॉट भाई। हर पर्पस के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। देयर विल बी अ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एवरी पर्पस। लेट्स से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ गेमिंग, most of you might have done gaming, या फिर might have done mobile gaming at least. So when it comes to gaming, you can say usually C sharp or C++, these kind of languages are used. When it comes to the development, that is backend development, we will also discuss what is backend. The language which we are today going to discuss about, that is Java, is going to be used. Not only Java, but other languages are also there. When it comes to front end, there will be again different languages or different frameworks on top of the language. It can be a JavaScript which is going to be used. So in different areas, in different domains, there will be different programming languages. Even if you include the, let's say, desktop application, let's say you are running anything, notepad, if you're opening a notepad in your laptop, windows laptop, so that notepad or even the windows itself will be written in C language. So every different area, every different application will have a different programming language. Now the points come, which language should we choose? कौन सी language choose करें फिर अब? There are a lot of programming languages. Out of a lot of programming languages, which one is the best? आज का सेशन जावा पे है तो जावा ही बेस्ट होगी, ऐसा लग रहा है क्या? Which language do you suggest or do you think is the best?
There is nothing like best programming language. First of all, just remove this myth from your mind. Whatever YouTube videos you might have watched, that what is the best programming language? Should I choose C++? Should I choose Java? Should I choose Python? And I missed Python also. When it comes to ML AI, mostly Python is used. So in different areas, different programming language has a dominance. So can I say that if I know Java, I will be able to do all of these things very efficiently? अगर मेरे को सिर्फ जावा आती है तो मैं ये सारी चीजें कर पाऊंगा क्या बहुत ही अच्छे तरीके से? जितने अच्छे तरीके से पाइथन एमएल में यूज होती है, क्या उतने अच्छे से जावा एमएल में यूज होती होगी? मतलब चैट जीपीटी में क्या उतने अच्छे से जावा यूज हो जाएगी? मे बी नॉट. Similarly in gaming, the way games are developed in Unreal Engine, or you can say different types of frameworks built on top of C Sharp, built on top of C++. That level of gaming you will never be able to basically build using Java. आप वो same gaming experience Java के through नहीं दे पाओगे. दे भी पाओगे तो काफी मेहनत लगेगी. Why? Because there is a lot of community getting involved. If let's say I am talking about GTA 5, does anyone know here who is a gamer that how many years it has been there that GTA 5 is you can say running, or GTA 5 is being developed, or maybe GTA 6? कितने सालों से GTA 6 बन रही है? GTA 6 का बनना यानी उसका कोड का लिखा जाना कितने सालों से बन रही है? एनी आइडिया? इट इज बीइंग डेवलप्ड सिंस मोर देन 10-15 years, मतलब 10-15 साल से भी ऊपर हो चुके हैं. 2013 से बननी स्टार्ट हुई थी. तो एनीवेज व्हाट वी कैन से इज that whatever code we are writing, whatever domain it falls in, there will be a specialized programming language for that domain. जिस भी डोमेन में हम काम कर रहे हैं, जिस भी तरह की हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस डोमेन में, उस तरह के एप्लीकेशन में कोई स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी. नाउ व्हेन इट कम्स टू जावा, why should we choose Java? Because today's session is on Java. Java is a very good, you can say, tool for web applications. इंस्टेड ऑफ बैकएंड लेट्स राइट वेब. व्हाट डू यू मीन बाय वेब? अगर मैं बोलता हूँ आपसे वेब, अगर आपको थोड़ी सी भी कोडिंग नहीं आती तो क्या दिमाग में आता है जब मैं बोलता हूँ वेब? व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन आई से वेब? ओके, www, what else? Websites, okay, that is a full form of web, but anything, anyways, web applications, okay. So in web, there are again different things. Like I just wrote backend, I wrote front end, then there is a database, then there is APIs, then there is security, then there is authentication, authorization, hell lot of things. Now, where will Java fit in, or where will Java be a good fit? हम कहाँ कहाँ पर Java को use कर सकते हैं? That we are now going to discuss. First of all, when it comes to Java, the most famous application of Java, which used to be there, although now it is not that much famous application, but it used to be the most famous application of Java, which is mobile application development, and specifically Android application development. मतलब पहले कितने भी Android apps बनती थी, सारी Java में बनती थी. Although today most of the apps, the new apps, are built in Kotlin. This is a new programming language by Google, but you can say still a lot of applications in Android are written in Java only. अभी भी काफी applications है जो Android पर चलती हैं Java के through. Second thing, just now I said backend. Now, what do you think is a backend? What do you think you mean by backend, or what do I mean by backend development? Backend का क्या मतलब होगा? Backend means backend site. कोई थोड़ी सी proper definition? Kotlin is based on Java. Yes, Kotlin takes inspiration from Java. Business is backend is the place to do the business logic. Very good. Servers, backend site work. Okay. Works like how it works. How data processes in backside of the running application. API tools work. Android Studio. कुछ कुछ चीजें मतलब ठीक है बैकएंड के लिए, कुछ कुछ चीजें थोड़ी दूर जा रही हैं या फिर थोड़ी इनकरेक्ट है, बट एनीवेज जस्ट ट्राई टू आंसर. Right now, I am not judging anyone whether you are correct, whether you already know the terms or not. Right now, we are just exploring that what is Java or what is development in general. Server side coding. Okay.
Let's take a very simple example. How many of you have used Uber application or Ola application? यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने Uber यूज करा है? बट मोस्टली सबने किया होगा. In Uber application, whenever we give the pickup and whenever we give the destination, what does the Uber app show you? जैसे ही आप पिकअप डालोगे, जैसे ही आप डेस्टिनेशन डालोगे, and also it might give you option for the type of car which you can choose, maybe auto, maybe rickshaw, maybe sedan, or maybe SUV, whatever. What is the next thing which you will get in your screen? अगली चीज क्या आएगी आपके पास? As soon as you let's say hit cab book, जैसे ही आप बुक पर दबाओगे या जैसे ही आप मे बी राइड पर दबाओगे, will it show a map? क्या एक मैप दिखेगा? Below the map there will be some rupees, some estimated amount, let's say 100 rupees for 5 kilometers, something like that, or 10 kilometers, something like that. क्या एक मैप दिखेगा? मैप के नीचे आपको पैसे दिखेंगे और पैसे के साइड में कितने किलोमीटर उतना दिखेंगे, एस्टिमेटेड ड्रॉप दिखेगा, एंड सो ऑन. नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस मैप, आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. Is map which is being used by Uber, is it developed by Uber only? क्या जो मैप Uber यूज कर रहा है अपनी एप्लीकेशन में, जो आपको दिखा रहा है, क्या वो Uber ने बनाया है? No, it is being developed by Google. It is using Google Maps. अगर उबर की एप्लीकेशन में देखोगे तो जो अंदर मैप्स यूज हो रहे हैं वो गूगल के मैप्स यूज हो रहे हैं, बिकॉज ओनली 2 or 3 कंपनीज आर मैनेजिंग देयर मैप्स एप्लीकेशन. वन इज गूगल, वन इज एंड्रॉइड, सॉरी द एप्पल, and one is the Indian website, or you can say Indian government, whatever. So what we can say is Google Maps is what Uber is using. Now, will Google share their code base to Uber? Just use our code base and use the map code. हमारा वाला जो हमने मैप का कोड लिख रखा है कि भाई ये लॉन्गिट्यूड है, ये लेटीट्यूड है, इससे हमारा कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं, क्या वो सारा का सारा लॉजिक क्या गूगल उबर के साथ शेयर कर देगा? इज इट गुड फॉर गूगल इफ द गूगल कंपनी इज शेयरिंग एंटायर बिजनेस लॉजिक टू द उबर एप्लीकेशन बिकॉज उबर इज यूजिंग इट? ऑब्वियसली नेवर. भाई इसमें तो गूगल का फिर अपना खुद का, आप बोल सकते हो, आईपी छिन गया, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी छिन गया. The Google Maps is a property which belongs to Google only. So if anyone wants to use Google Maps, they can use it. If they want to use it very frequently, like Uber will hit the Google Maps very frequently, वो बार बार अलग अलग यूजर Google Maps डालेंगे Uber के थ्रू, so obviously Google Maps will charge Uber, but it will not share the code. What it is going to share to Uber? Google Maps या Google क्या शेयर करेगा फिर Uber के साथ? What do you think? It will share an API. अब ये क्या नहीं बोला है? What is an API? API's full form is nothing but application programming interface. Application programming interface. थोड़ा बहुत समझते हैं. Let's try to understand this application programming interface. Let's say I am talking about Google Maps only. Can I say Google Maps will work if I will give the source, if I will give the destination, it will give me the distance, the minimum distance in hours. अगर मैं Google Maps को एक इनपुट देता हूँ कि सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, तो क्या वो मेरे को आउटपुट ला कर देगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच? यस और नो? इन टर्म्स ऑफ द पाथ, in terms of time, or in terms of distance, it will give me the shortest distance. In terms of different ways also, maybe a rail, maybe cab, or anything. So what is Google doing? Google is writing the code that how will it give the distance, that is based on some algorithm, that is based on the extra algorithm or whatever. अलग अलग लॉजिक लिखे गए होंगे जिससे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला जाएगा. मे बी इन योर एलिमेंट्री school mathematics also, school physics also, you might have learned there is a distance, then there is a displacement. So there are different logics which are getting applied to find the shortest distance. There is Dijkstra algorithm majorly being used. Whatever algorithm they are using, whatever code, whatever logic they have, we don't care. What we need is we want to give input, we want to get output. हमें इनपुट देना है, हमें सोर्स और डेस्टिनेशन गूगल मैप्स को देना है. गूगल मैप्स मुझे क्या दे दे? गूगल मैप्स मुझे उनके बीच में शॉर्टेस्ट टाइम निकाल के दे दे. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट टाइम, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? इज दिस व्हाट वी नीड? यस और नो? एवरीवन प्लीज कंफर्म. थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे तो ही मजा आएगा, वरना बोर हो जाने लग जाएंगे. इफ आई विल गिव सोर्स डेस्टिनेशन, विल इट गिव मी द शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट
distance. Yes. So can I say I am giving some input, I am getting some output? क्या मैं बोल सकता है मैं कुछ input दे रहा हूँ मुझे कुछ output मिल रहा है? And whatever logic Google Maps is writing, that is not written by me, that is written by Google only. So what Google Maps will do, they will provide this API. What this API is doing? API is providing this interface. That is, you give us input, we will get you the output. आप हमें input दो, हमें मैं output वापस दे देंगे. So this interface, this you can say application is being provided by Google Map in the form of API. थोड़ा सा इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखें. Let's try to hit some APIs. देखें एक बार. Not for Google Maps, but some other APIs. Let's try to hit. So there is a very good website which I have already like opened in my Chrome. Website name is Rapid API, which will provide all the free APIs. मतलब काफी सारी free APIs होती हैं, which you can also use, which I have subscribed right now. One API, very famous API, is known as Google Translate. Again, have you used Google Translate? क्या सबने यहाँ पे Google Translate यूज किया ही होगा? नॉट लाइक दिस, मतलब इस तरह के प्लेटफॉर्म पर यूज नहीं किया होगा, बट डायरेक्टली यू माइट हैव यूज फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द वेब पेज, यू कैन से, जैसे आपने गूगल ट्रांसलेट टाइप किया होगा, उसने एक दिखा दिया होगा, दो बॉक्स दिखाए होंगे. एनीवेज, what you can see here is there are some end points, there are some links. तीन तरह के links है. One link, one API is to detect what is the programming, what is the language which you are sending. If I will, let's say, send English is hard, what is this language? ये जो मैंने लिखा है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? Whatever I have written, in which language is it? English. So what will I get the output if I will give the input as English is hard? I will get the output as English only. It is most probably English. So output will be a little bit difficult for you to understand, but let me just show you. It will say there is a confidence. भाई क्या गूगल शॉर्ट बोल सकता है कि भाई इंग्लिश ही है? मे बी किसी और लैंग्वेज में भी यही सम वर्ड्स यूज होते हो. मे बी इन फ्रेंच लैंग्वेज ऑल्सो सिमिलर वर्ड्स आर यूज. So Google will also give you that how much percentage probability is there, how much confidence I am having that this input which you are giving is in English. So confidence they are saying is one. One means 100%. By 100% ये English ही है. They are having the language EN. EN starts for English. And reliable, they are saying false. I'm not sure what is reliable, but most probably we will use these two values. What if I give value as bonjour? What do you think will I get the output? अगर किसी को थोड़ी बहुत आती हो ये लैंग्वेज, तो क्या आउटपुट मिलना चाहिए हमें? व्हाट शुड बी द आउटपुट? ऑल्दो इट माइट स्टिल गिव इंग्लिश, बट bonjour is a French word for good morning. So as you can see, it is giving me FR. FR means French. Whatever input you will give, it will correspondingly give me the output. Maybe if I try Vasudev Kutumbakam, but the spelling is very difficult. Vasudev. Any simple Sanskrit word? Anyone? Just last example. कोई सिंपल सा इंग्लिश वर्ड देना चाहेगा, सॉरी संस्कृत का वर्ड चैट में? सत्यमेव जयते. आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल टेक हिंदी, it has Hindi or English, but let's try. Satyamev Jayate. So if I will test, it is giving me Hindi LATN. I am not sure what is LATN, but it is giving me Hindi. HI most probably stands for Hindi. So this is one type of API. Second type of API which they are providing in Google Translate is that you will translate the language. You will provide the string, whatever you want to translate. आप वो sentence बोलोगे कि मेरे को my name is Archit Agarwal. You want to translate it into some other language, and you will most probably also give the language in which you want to translate. Although I have not tried this, but you can also try it on your own. Actually, translate is the third API. Second API is some language, something. I'm not sure. मतलब you can explore it on your own. So let's go to the second API. एक और example लेते हैं. Do you usually use weather APIs? Not weather API, but do you usually use weather websites जो आपको weather दे देंगी, daily का weather दे देंगी? Yes or no? You might have used some applications which will give you the weather of today in Delhi. आज का भाई दिल्ली का मौसम बहुत ही खराब है. अब जो आपका PMI इंडेक्स है वो काफी ऊपर पहुंच चुका है, 950. Anyways, what we are going to do is we are going to say that let's give some values to this weather API. Although it will require some latitude and longitude, which is very difficult, but let's just take the same input which they have given us.
So if I will hit it, it will give me the name, the location, the region actually, the country, which is United Kingdom, the latitude, longitude, and also it will give me the current temperature. The current temperature in Celsius, the current temperature in Fahrenheit. ये सब दिखते हैं हम अगर किसी भी वेदर एप्लीकेशन पर जाते हैं तो ये सब हमें देखने को मिलता है. Wind speed also, it will give you a lot of details. You can also change the coordinates according to whatever you are residing in. Just Google what are the coordinates for Delhi and send it here. Similarly, for Reddit, थोड़ा सा एक मतलब let's try a new thing. In Reddit, there is also a API which they provide. What we can do is we can hit test, and if I will hit test, it will give me some memes. थोड़े से memes मेरे को ये output ला कर दे देगा. So if I just click this one of the trending meme, मतलब एक इसमें से trending meme को click करके देखते हैं. All the page is not found. It is now showing page not found. अच्छा पूरा copy नहीं किया. So if I copy it completely, it should give me the corresponding meme. जो भी वो link के corresponding meme है, तो भाई मेरे को एक बढ़िया सा Power Rangers का meme दिख रहा है. Anyways, are you getting some idea of what are APIs? Are you getting some idea of what do you mean by front end versus back end? In back end, we will write these APIs, we will design these APIs, but in front end, we will only call these APIs, we will only display whatever we are getting from API. फ्रंट एंड में हम क्या करेंगे, जो भी हमें एपीआई से मिल रहा है हम उसे सुंदर सा दिखा देंगे. मतलब अगर आप एक गूगल ट्रांसलेट की एपीआई से आपको ये मिल रहा है, ये गंदी सी चीज, मतलब ये गंदी सी जेसॉन है, ये आपको आउटपुट में मिल रहा है. व्हाट विल यू डू इन फ्रंट एंड इज यू विल कन्वर्ट दिस वेरी बैड स्ट्रक्चर्ड कोड, वेरी बैड स्ट्रक्चर्ड डेटा इनटू अ प्रॉपर डेटा, जो कि आप गूगल ट्रांसलेट पर जाके डायरेक्टली कर सकोगे. दैट इज दिस पर्टिकुलर इज द फ्रंट एंड फॉर गूगल ट्रांसलेट. ये चीज क्या है, गूगल ट्रांसलेट का फ्रंट एंड है. ये चीज क्या है, गूगल ट्रांसलेट का बैक एंड कर रहा है. बैक एंड आपका वो डेटा ला कर दे रहा है, फ्रंट एंड क्या कर रहा है, उस डेटा को सुंदर तरीके से दिखा रहा है. आप कहीं पे भी क्लिक करोगे, इफ यू विल क्लिक let's say if you will say Satyamev, anything, the same thing, Satyamev. So it will also give you suggestions. It will also basically just correspondingly give you the buttons for speaking or button for copying, anything. So front end and back end. Is everyone clear? A simple difference between two. Chat is disabled. Okay, let me enable it again. No, chat is already enabled. You can answer in host. I will be able to see your chats. जो भी होस्ट एंड पैनलिस्ट पे चैट भेजेगा वो मैं चैट देख पा रहा हूँ. सर बट हाउ टू फाइंड वेदर इन गूगल? सी इन व्हेन यू वांट टू फाइंड द वेदर इन गूगल, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट हिट द यूआरएल. आपको एक यूआरएल यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर मिलेगा, मतलब गूगल के लिए जैसे www.google.com, for YouTube it is www.youtube.com. Similarly, for weather application, there will be a URL. Go to that URL, that is, go to that front end. In front end, you will find some buttons that I have to put Delhi, I want to get the temperature, and you will get the latest data from backend. आपको backend से latest data मिलेगा. Okay. REST API is a technique of building APIs. It is a way of writing APIs where you are using CRUD operations or where you are using RESTful features. Anyways, just focus on API for now. आज की क्लास बेसिक क्लास है. तो जिनको थोड़ी भी जावा प्रोग्रामिंग या थोड़ी भी कोडिंग नहीं आती, क्या उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है फ्रंट एंड बैक एंड और जावा के यूजेस? हाँ या ना, इन द चैट? यस. Any other application anyone have heard apart from writing backend, apart from uh, doing mobile development? कहीं और भी जावा यूज होती हो मे बी इनके अलावा भी, या बस यहीं पे यूज होती है? दो चीजें हैं. Database, no, database is not where Java is used. Database is a different concept altogether. In databases, languages like SQL are used, structured query language, or you can say there are frameworks like NoSQL databases, like Google ka Firestore, there is Amazon AWS, and so on. So database is not where Java is there. Sir, in web development, Java is used. Yes. Can I say this all this data which I am getting, is it also included in web development only? जो data मुझे मिल रहा है ये भी तो web development का ही part है, ये भी तो web का ही part है. आप Chrome पर ही तो अभी भी. So backend is also a part of web development. Front end is also part of web development. अब जो हमें दिखता है हमें लगता है बस वही है web. मतलब whatever we are able to see on Chrome, that is web. No.
Backend is also on a part of full stack web development. If you want to become a good developer, you have to become full stack developer, which will make you learn front end also, which will make you learn back end also. मतलब आप वेबसाइट बनाओगे भी जो दिखेगी, आप पीछे डेटा कैसे आ रहा है आपके पास वो भी लिखोगे, एंड आप वो डेटा स्टोर कैसे हो रहा है किसी जगह पर, किसी शीट में या किसी टेबल में, वो भी लिखोगे. So, as a full stack developer, you have to learn Java or you have to learn backend development. If you are choosing Java, you can also choose other languages. So, like Java is used to connect to the database. Connecting to the database is different, but writing the database is different. Database is a different technology. ठीक है? Okay. Any other example? Any other use case of Java? Earlier, Java was also used in front end. पहले Java को front end में भी यूज करा करते थे. Although nowadays no one uses Java in front end. Now, when it comes to other use cases, there is a use case related to us. Does most of us want to become a software engineer, or are we aspiring to become software engineer? क्या हम देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की, या फिर ऑलरेडी कोई हमारी फैमिली में हो जो कि मतलब बन रखा हो, सैलरी अच्छी कमा रहा हो, तो उससे इंस्पिरेशन लियो. So when it comes to becoming a software engineer, there is a very important concept or very important subject which you have to learn. That subject is known as data structures algorithms. Although data structures algorithms is not a use case in industry. Industry में data structures algorithms कुछ नहीं होता. It is a subject which you have to learn. And in this subject, what you will do is you will solve a lot of problems, different problems using Java programming language. Without data structures algorithm, you will not be able to clear any company's interview. किसी भी कंपनी का इंटरव्यू पकड़ लो, 99% चांसेस है कि आप बिना डीएसए करे उसको नहीं निकाल पाओगे. You will not be able to clear it. So DSA is very important, and you can learn DSA using Java only. Now, when it comes to DSA, does anyone have any idea what is DSA? थोड़ा सा context देना चाहता हूँ. Just giving you a little bit context. What is DSA? हमें ये तो पता चल गया कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, उसमें से कोई सी भी चूज कर लो. देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लेट्स चूज जावा. नाउ व्हेन वी आर चूजिंग जावा, व्हाट टू डू? वी नीड टू मे बी लर्न डेवलपमेंट, मे बी बैक एंड, मे बी फ्रंट एंड, मे बी मोबाइल, and we also need to learn DSA. Now, what is DSA? What is data structures algorithms? Logic. Okay. Way of organizing the data. Okay. चलो इसके लिए भी एक रियल लाइफ एनालॉजी लेते हैं. Let's take an example of dictionary. How many of you have you used a dictionary, a physical dictionary? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक बुक वाली डिक्शनरी को यूज कर रखा है, जो हाथ में होती है, मतलब जिसमें पेजेस होते हैं? If I ask you to search a word and give me the meaning of that word, let's say I am giving you the word chaos. Although some of you might not know the meaning of this word, this is problematic. Anything which is problematic, that is chaotic. हम बोलते हैं ना कि chaos मच गया, मतलब प्रॉब्लम हो गई, रायता फैल गया, जो भी है. So, if I ask you, how will you give me the meaning of this word chaos from this dictionary? What steps will you follow? आप इस वर्ड का मीनिंग मुझे इस डिक्शनरी में से कैसे निकाल के दोगे? क्या स्टेप्स फॉलो करोगे आप? Okay, we need to first search for the first letter C. Then within C, we have to search for what? Alphabetical order. Okay. In C section of directory. Okay. Then CHA. Okay. Yeah. There is one way to search the word. Do we know that dictionary is sorted? क्या हम बोल सकते हैं डिक्शनरी में पहले सारे ए होंगे, फिर सारे बी वाले वर्ड होंगे, फिर सारे सी वाले वर्ड होंगे? All the words starting from A, then all the words starting from B, then all the words starting from C will be there in the dictionary. If I am asking you to give me the word which is uh, chaos, give me the meaning of this word. One way is turn page one by one. एक एक करके पेज पलटो. First page you will have for all the words with A, then all the words with B, then all the words with C. All the एक पेज में नहीं होंगे, multiple pages होंगे. First turn all the pages for A, then all the pages for B, then within C turn the pages for CA, then CB, then CC, and so on up till CH. Within CH also find the word chaos. Is this one algorithm? Is this one way to find the word? एक तरीका क्या यही है, एक एक करके पेज पलटो, जब तक मिल गया, जब तक मिल नहीं जाता वर्ड पलटते जाओ पेज.
बट इज इट एफिशिएंट वे? क्या ये अच्छा तरीका है वर्ड का मीनिंग ढूंढने का? ऐसे ढूंढ देंगे हम डिक्शनरी में किसी भी वर्ड को? ऑल्दो इन टुडेज वर्ल्ड वी यूज गूगल, बट इन माई टाइम, whoever is from my time, how do we used to find the meaning of the words using dictionary? कैसे ढूंढते थे हम? ये तो भाई बहुत लॉन्ग प्रोसेस है. दिस प्रोसेस विच आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड, दिस इज लीनियर सर्च प्रोसेस, लीनियर सर्च एल्गोरिथम. हम एक एक करके लीनियरली सर्च कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू ईच पेज एंड सर्चिंग द वर्ड. कैन आई से अ बेटर वे विल बी जस्ट ट्राई टू ओपन द बुक इन द हाफ. ट्राई करो कि बुक को ऑलमोस्ट तुक्का मारते हैं, बीच में खोलते हैं. इफ लेट से द बुक इन द हाफ ओपन्स एट पी, अगर मान लो बीच में से आपने बुक खोली, वो पी वाला पेज खुल गया, तो वेयर शुड यू गो नाउ इफ यू वांट टू सर्च फॉर द वर्ड chaos? शुड यू गो इन द लेफ्ट पेजेस और इन द राइट साइड पेजेस? किस साइड वाले पेजेस पर जाएंगे? We can go in the left side pages. Now in the left side pages you again almost open the book in half. आपने दोबारा तो तुक्का मारा, बीच में खोलने की ट्राई करी बुक को. Maybe this time you opened the book at page number B. उस पेज पर खोल ली बुक को जो जहाँ पे बी रखे हैं, बी वाले सारे वर्ड हैं. नाउ वेयर विल यू गो? आप किस साइड जाओगे? विल यू गो इन द लेफ्ट साइड और विल यू गो इन द राइट साइड? मतलब पिछले वाले पेजेस पर जाओगे, अगले वाले पेजेस पर जाओगे? यू विल गो इन द राइट साइड, एंड देन यू मोस्ट प्रोबेबली विल लैंड एट सी. तब जाके कहीं आपको सी वाले पेजेस मिलेंगे. इज दिस हाउ वी सर्च? भाई ऑलमोस्ट तुक्का मारते हैं, आगे चले गए तो पीछे आते हैं, पीछे चले गए तो आगे आते हैं. इसी तरीके से डिक्शनरी में सब वर्ड ढूंढे जाते हैं या ढूंढे जाते थे. So that algorithm where we are searching at the mid, either going in the left or going in the right, that algorithm or that way of searching is known as binary search. So one way is a poor way or less efficient way, which is linear search. एक एक करके पेज को पलटना. One way is a efficient way in which we are finding the page in minimum time, in minimum space. हम कम से कम टाइम लेकर उस पेज तक पहुंच रहे हैं. So, do we only need to code or also code in the best possible way, in the most efficient way? क्या हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि बस कोड कर दो, जो क्वेश्चन बोला गया है कैलकुलेटर बनाना है तो 1+1 बस 2 आ जाए, चाहे वो 1+1 को 2 आउटपुट देने में वो 1 मिनट लगा दे? इज इट गुड? इज दैट कैलकुलेटर गुड विच विल गिव यू द आउटपुट ऑफ 1+1 इक्वल टू 2 इन 1 मिनट और 2 मिनट्स? Obviously not good. What we have to do is we have to write the code efficiently. So when it comes to data structures algorithms, you learn how to write code efficiently. जब आप डीएसए पढ़ते हो तो आप ये समझते हो कि कोड को efficiently कैसे लिखना है, फास्ट कैसे चलाना है. How should your code be fast? How should your code be taking less space? कम space ले. One application, maybe PUBG is taking 1 GB. Other side Candy Crush is taking 100 MB. So what will your father or grandfather use? Which application will he try to install? अगर आपके कोई दादा या परदादा गेम खेलते हो एप्लीकेशन मोबाइल पर, तो क्या वो पबजी डाउनलोड करेंगे या वो कैंडी क्रश डाउनलोड करेंगे? वन एप्लीकेशन टेक्स 1 GB, अनदर एप्लीकेशन टेक्स 10 MB. वेरी इजी टू इंस्टॉल. ऑब्वियसली कैंडी क्रश, और वो पुरानी भी है. So what we say is we try to reduce the space complexity. We try to reduce the amount of space taken by the code. कोड कितना स्पेस ले रहा है चलने में, या फिर कोड कितना स्पेस ले रहा है स्टोर होने में, वो कम करने की ट्राई करेंगे. एंड वी ऑल्सो ट्राई टू मेक द कोड फास्टर. हम कोड को तेज बनाएंगे ताकि वो जल्दी चले. द बेटर, फास्टर द कोड, द बेटर द कोड. So this is all what we learn in DSA, and like in Geekster or in any other tech, you are mostly firstly taught programming language, then you are taught DSA. आपको किसी भी एडटेक में या किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाओगे तो पहले आपको डीएसए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद पढ़ाया ही पढ़ाया जाएगा, बिकॉज डीएसए, विदाउट डीएसए यू कांट डू एनीथिंग, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर अगेन. एनी क्वेश्चन टिल नाउ? किसी को कुछ भी पूछना हो अब तक? We have discussed some applications of Java. We have discussed some basic terminologies like backend, frontend, API. Yes, you will be getting a link for the attendance just right before the session will end. If you will fill that form, in that form you will get the attendance. You will also get the certificates. जो भी session पूरा attend करते हैं उन सब लोगों को एक certificate मिलेगा which you can put in your resume, which you can put in your LinkedIn profile. So just wait for the entire session. You can also put your doubts. I will try to take the doubts while
going into the session. Is everything required in Java in DSA or not? See, if you are picking Java as a language, just do entire DSA in Java. अगर आपने एक बार Java चुन ली कि भाई मैं तो कोडिंग जावा में करूंगा, तो पूरी अपनी जर्नी में जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, जब तक आप सीख रहे हो, तब तक जावा ही रखना। मतलब डेवलपमेंट कर रहे हो तो भी जावा से करो, जब डीएसए कर रहे हो तो भी जावा से करो। ऑल्दो वंस यू लर्न एवरीथिंग, वंस यू नो डेवलपमेंट, वंस यू नो डीएसए, then learning a new language will be very 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 easy. You will be able to learn a new language, maybe C++, maybe Python, in just 4 or 5 days or max to max 1 week. एक हफ्ते में आप दूसरी लैंग्वेज सीख लोगे। Java and JavaScript are both same. No, both are completely different. Although the names are similar, but languages are completely different. JavaScript, as the name suggests, is a scripting language which is used to write scripts for front end or for, you can say, back end also. But Java is primarily a language, a programming language more, which is used to write the server side code, or which is used to write the mobile development which I've written. So completely different languages, completely different concepts also. Java is a object oriented programming language. JavaScript is more of a functional language. It is also having features of OOPS, but more of a functional. So just giving you idea that both are different. Java with cloud is possible. Yes, एक चीज तो मैं भूल ही गया लिखना, cloud. Now let's also discuss about cloud. Does anyone know what is cloud or what is DevOps? क्या यहाँ पे कोई है जिसको क्लाउड के बारे में पता है या यूज किया हो? यू माइट हैव यूज क्लाउड टिल नाउ इन योर एप्स। कौन कौन सी एप्स होती हैं जो क्लाउड पर आप चलाते हो? व्हाट ऑल एप्लीकेशंस आर देयर व्हिच आर यूजिंग क्लाउड? कैन आई से गूगल ड्राइव? क्या मैं बोल सकता हूँ गूगल ड्राइव पे जो भी आप डालोगे वो आपके लोकल पे स्टोर नहीं हो रहा? इट इज नॉट गेटिंग स्टोर्ड इन योर फोन, इट इज स्टोर्ड समवेयर एल्स. When you will use Google Photos, it is not stored in your phone, it will be stored somewhere else. When you are going to use, maybe let's say, Gmail, all the Gmail mails are not stored in your local. सारे के सारे मेल अकाउंट्स जो मेल आपके पास आई हैं वो आपके पास तो स्टोर नहीं है. All those mails are stored somewhere else, and you just view them by downloading them using internet. So, what do you mean by cloud? I say cloud is nothing but not really cloud. It is not physically cloud, but a remote machine. एक बहुत ही दूर दराज वाले इलाके में पड़ी हुई कंप्यूटर है. Cloud is nothing but a concept where when you are sitting in Delhi, you are using a machine, a very big machine, placed at maybe Bangalore, placed at maybe Mumbai. एक बहुत ही बड़ी मशीन है जो बेंगलुरु में या फिर मुंबई में गूगल ने लगा रखी है. मैं सिर्फ गूगल का एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि समझ आ पाए. इट इज ऑल्सो बाय डन बाय Amazon, इट इज ऑल्सो डन बाय Microsoft. So that machine you are using from your home, but is everything free? क्या अगर मतलब इतनी दूर मशीन उन्होंने इतनी बड़ी, इतना बड़ा कंप्यूटर लगा रखा है, इट विल बी हैविंग द मशीन, और यू कैन से द क्लाउड server will be having at least, you can say, 500, not 500 but maybe 64 GB RAM, 128 GB RAM, or 1 TB storage, 2 TB storage. Will they give everything to you free? क्या वो इतना बड़ा सिस्टम जहाँ पे 128 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज होती है, 128 GB रैम वाला कंप्यूटर क्या आपको फ्री में दे देंगे? जो ये क्लाउड वाले सर्वर बनाते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, विल दे गिव यू टू फ्री? नो, ऑब्वियसली नॉट भाई, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता. कैन आई से इन गूगल ड्राइव ऑल्सो आफ्टर 15 GB विल दे आस्क फॉर पेमेंट? क्या 15 GB के बाद वो हमसे पेमेंट मांगते हैं? तो ये 15 GB से और रखना चाहते हो तो पेमेंट दे दो. Similarly, in Gmail also, if you want to have premium features, you can have in YouTube also. If you want to download in one 1080p, अगर आप 1080p में डाउनलोड करना चाहते हो तो भाई हमें YouTube प्रीमियम दो. So whatever features you are using on cloud, only a basic part will be free, then it will be costly. And again, Java is used to run those applications on cloud using a concept known as DevOps, using a, you can say, uh, framework or a technology used as DevOps. So in DevOps, there are couple of things, Docker, Kubernetes, उस चीज पर नहीं जाते, but Java is also used while doing cloud computing. Okay. Any other questions? We can share the resources and retrieve the resources from cloud. चलो ठीक है, मतलब अब डेफिनेशन आई है, बट कोई नहीं.
Sir, we can't understand Hindi. Don't worry. I am keeping the session in Hindi plus English only. So whatever I am speaking in Hindi, I am just repeating in English also. I am not sure who invented cloud computing, but whoever invented, he was a great genius. Okay. So, can you please briefly explain about DevOps? देखो मैं DevOps explain तो कर देता हूँ, but although वो आज के agenda से different है, it is not in the agenda for today's session. But since I have worked in DevOps, I can just share you a basic idea. So when it comes to DevOps, it is combining two words, which is development plus operations. It means whatever code you will be writing, is it just going to be used by one user? क्या जो भी आप कोड लिखोगे क्या वो एक यूजर यूज करेगा? मान लो इफ यू आर राइटिंग द कोड फॉर हॉटस्टार एप्लीकेशन, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, विल ओनली वन पर्सन वॉच आईसीसी वर्ल्ड कप एट वन टाइम? एक बारी में एक ही जना देखेगा क्या? आंसर इन चैट. Will only one person watch Hotstar at a time, or will multiple millions user will watch Hotstar at a single time whenever match is going on? Obviously, multiple users will watch, and if multiple users are watching, should the should the Hotstar application run such a manner that no one is having any lagging issues, no one is having any crashing issues? किसी का भी फोन पर वो एप्लीकेशन क्रैश नहीं कर रही, किसी भी के भी फोन पर वो लैग नहीं कर रही, क्या ये हॉटस्टार को इंश्योर करना पड़ेगा? यस और नो? So when it comes to scaling the solution, when it comes to increasing the number of users, when it comes to providing the available solution, we do DevOps. जब भी हम एक ऐसा सॉल्यूशन लिखते हैं जो आज के दिन तो मे बी कोई नीदरलैंड का मैच हो रहा है, तो आज के दिन तो मे बी 1 lakh users are watching it. The match is being watched by 1 lakh users, or Hotstar is being used by 1 lakh customers. But when there will be India versus Pakistan, most probably you can say 5 crore users will watch it. So your code should be in such a manner that if right now it is handling 1 lakh users, tomorrow it should be able to handle 5 crore users if you know that there will be 5 crore users tomorrow. So you have to scale the solution. आपको अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को इस तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा यूजर्स को टैकल कर पाए, ज्यादा रिसोर्सेस अगर उसको इनपुट मिल रहे हैं तो वो ज्यादा आउटपुट वापस दे पाए. नाउ व्हेन इट कम्स टू अवेलेबिलिटी, कैन आई से इट शुड नॉट लैग, इट शुड नॉट क्रैश? अगर एक एप्लीकेशन चल रही है तो भाई वो 24/7 चलनी चाहिए, यस और नो? Otherwise, the customer experience will be very bad. If some application is not running 24/7, obviously you will have some downtime. If there will be downtime, you will uh, uninstall that application. भाई अगर मैं आपसे बोलूं, क्या पुराने जमाने की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हमेशा डाउन ही पड़ी रहती थी? इवन टुडे द आधार वेबसाइट, ड्यू टू अ लॉट ऑफ लोड, इज इट ऑलमोस्ट डाउन एवरी टाइम? हर बारी मोस्टली वो डाउन ही दिखती है, मतलब कभी आधार डाउनलोड करने जाओ तो देखा होगा. हाँ या ना? क्या यूजुअली वो डाउन रखती है? सो इज इट गुड दैट द वेबसाइट इज डाउन? इज इट गुड दैट द वेबसाइट इज नॉट लोडिंग, क्रैश कर रही है? अच्छा है क्या यूजर एक्सपीरियंस? नो. So what we do in DevOps is we provide such technologies, we provide certain steps so that it is not going to be having a downtime, or it is going to have less downtime, as less as possible. जितना कम हो सके डाउन टाइम उतना करना है, जितना हो सके उतना प्रोग्राम को स्केलेबल बनाना है. इसमें थोड़ी और बात करें, और इज दिस बेसिक आइडिया क्लियर? whoever asked about DevOps, should I discuss more about DevOps or should I go back to Java? Shubham, any course for Java with cloud? I will share the course in the last, or whenever you will be getting the mail, I will try to add some resources for Java with cloud. Although, since I have not followed any course, I think I will not be the right person to suggest you. But still, I will try to search any course. And once you will be filling that feedback form, just try to send me a request also on LinkedIn. I will try to reply. जो भी पर्सनल क्वेरीज हैं वो ट्राई करो कि लिंक्डइन पर आप मेरे से कनेक्ट करो और वहां पे पूछ लो. आई एम यूजुअली एक्टिव देयर. ओके. नाउ एक सिंपल सा एग्जांपल है स्केलेबल समझने का. शुड वी टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्केलेबिलिटी? हाउ कैन वी स्केल हॉटस्टार? हॉटस्टार भूल जाते हैं.
Let's say you run a bank. Today in your bank, there are 100 employees. Tomorrow your bank might have 1,000 employees. Today your office is having capacity of 100 employees. Tomorrow you want 100,000 employees. What will you do? अगर आज के दिन आपके पास इतना बड़ा ऑफिस है जिसमें 100 एम्प्लॉय बैठते हैं, कल को आपको 1,000 एम्प्लॉय रखने हैं, तो क्या करोगे आप? व्हाट कैन बी द वेज इन विच यू आर स्केलिंग द सॉल्यूशन फॉर बैंक? आप बैंक के ओनर हो, व्हाट यू कैन डू? व्हाट आर द टू वेज? कौन से दो तरीके हैं जिनसे आप आज के दिन 100 पर हो लेकिन कल के दिन 1,000 एम्प्लॉयज को टैकल कर पाओगे? ऑफिस बढ़ाना पड़ेगा। Can I say one way is to increase the space of office? If today there is one floor, maybe tomorrow we can buy two floors. अगर आज के दिन हमारे ऑफिस एक फ्लोर पर है तो उस बिल्डिंग का एक और फ्लोर खरीद लेंगे। Yes or no? We will buy a second floor. If we need third floor, we will buy the third floor. If we are having fourth floor also, we will buy fourth floor. So this is one way of expanding. Can I say we are expanding horizontally? हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, मतलब सेम रिसोर्सेज वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड, उसी रिसोर्स में उसी बिल्डिंग में हम अपने एम्प्लॉयज को बढ़ाते जा रहे हैं। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। दीज कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड इन एक्चुअल प्रोग्रामिंग। आपको लग रहा होगा कि भाई ये कहानियां क्या बना रहा हूँ मैं, बट दीज आर द सेम टर्मिनोलॉजीज यूज इन कोडिंग। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रियल लाइफ एनालॉजी। दिस इज वन वे, बट व्हाट इज द अदर वे? एक तरीका तो ये है भाई, उसी बिल्डिंग में सारे एम्प्लॉयज बिठाते जाओ, बिल्डिंग के एक एक फ्लोर खरीदते जाओ। बट इज देयर अ लिमिट इन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग? क्या कोई लिमिट ही होगी क्या इंडिया में? कोई भी बिल्डिंग 10 फ्लोर या 20 फ्लोर इतने की होगी, उससे ज्यादा तो होगी नहीं। देयर विल बी अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फ्लोर्स इन द बिल्डिंग। व्हाट इज द अदर वे यू कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयज? और दूसरा तरीका क्या है? क्या आपको एसबीआई एक जगह दिखेगा? विल यू सी एसबीआई एट वन प्लेस ओनली? चैट में आंसर करना है। नो। कैन आई जस्ट ओपन अ ब्रांच ऑफ एसबीआई? कैन आई जस्ट ओपन अ ब्रांच ऑफ माई बैंक? So one office at one location, another office at another location, another office at another location. I will open different branches for the same office, for the same, you can say, company. At each branch, I will, let's say, have 100 employees. So this is another way. And now what we are doing, we are scaling vertically. हम और जगह acquire करते जा रहे हैं. Right now we are having branch in Delhi. We are also having office now. So we are launching a new branch in Mumbai. So we are vertically scaling. So do you think what what do you think is better? Is horizontal scaling better or is vertical scaling better? कौन सी स्केलिंग बेटर है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? नए नए फ्लोर्स खरीदना या फिर नई नई ब्रांचेस खरीदना? सॉरी, आई थिंक आई एम इनवर्स, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया। दिस इज vertically. Vertically means along the line, and this is horizontally. You are expanding horizontally. Obviously, we are saying having new branches will be better, क्योंकि इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। जितनी नई ब्रांचेस खोलना चाहो उतनी खोल लो। You can open as many branches as you want, but there is a limit in vertical scaling. There is no limit in horizontal scaling. So usually what we do is, if we want a solution which needs to scale at this much rate, we usually go for horizontal scaling. And whenever we want a solution which is not that much required to be scalable, we can also go for vertical scaling. ऑब्वियसली वर्टिकल स्केलिंग सस्ती होगी, ये वाली महंगी होगी, तो वो भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने पैसे हैं खोलने से पहले नई ब्रांच। तो is now the basic idea of DevOps clear? That what do we do in DevOps? We provide scalability, availability, security, authorization, authentication. Those are the other things. Yes. Okay. तो बेसिकली यही मैं Salesforce में करा करता था। आई यूज टू डू DevOps ओनली, बट नाउ आई एम नॉट डूइंग DevOps. नाउ आई एम बैक इन डेवलपमेंट, आई एम डूइंग जावा स्प्रिंग बूट। ठीक है, एक एमसीक्यू पूछो फटाफट। शुड आई आस्क वन एमसीक्यू? विल यू ट्राई टू आंसर? एवरीवन, if you are able to see the question, just write the answer in the chat. Just write the option number A, option number B, option number C, option number D. The question is, if I am writing a code in a particular programming language, I want my code to run on any platform. What is the programming language which I should choose and why? अगर मैं एक कोड
अलग अलग तरह के पोर्टल्स पर चलाना चाहता हूँ, अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म पर चलाना चाहता हूँ. वन प्लेटफॉर्म आई वांट टू रन माय प्रोग्राम इज ऑन मे बी विंडोज, वन इज ऑन मे बी यू कैन से एंड्रॉइड, वन इज ऑन लेट्स से डेस्कटॉप. व्हाट लैंग्वेज विल आई चूज एंड व्हाई, कौन सी लैंग्वेज मैं चूज सबसे बेटर रहेगा करने का और क्यों करूंगा. ओके ग्रेट. आई कैन सी मोस्टली आर करेक्ट, मोस्टली लोग सही हैं. बट स्टिल जो भी आंसर करना चाहते हैं फटाफट चैट में करो, मैं सबके आंसर देख पा रहा हूँ. ऑल्दो यू विल नॉट बी एबल टू सी रिस्पॉन्सेज ऑफ अदर्स बट आई कैन सी रिस्पॉन्सेज ऑफ एवरीवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, C++ is a C++ or is a C language going to support multiple platforms? क्या आप C++ या C लैंग्वेज का कोड जो भी लिखोगे क्या वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल सकता है? जस्ट अगेन गिविंग यू एग्जांपल, हैव यू डाउनलोडेड एनी सेटअप फ्रॉम इंटरनेट विच इज हैविंग .exe इन द लास्ट? क्या आपने कभी भी कोई विंडोज जब यूज किया हो तो क्या कोई सेटअप डाउनलोड किया है जिसमें लास्ट में exe लिखा होता है? Whenever you click that exe file it will run. So if you will try to run this exe file in let's say your Windows, it might run when the Windows is let's say i7 or something. But if you will run that same exe file in Mac or in Android, will that same application run? क्या अगर कोई गेम हमने कंप्यूटर के लिए बना रखी है, लैपटॉप के लिए बना रखी है, तो क्या वो सेम गेम मोबाइल पर चल जाएगी क्या? No, the same game will not run. Why? Because that game is written in C language, C++ language, that is exe file. जो भी गेम्स लिखी होती हैं वो C++ लैंग्वेज, इन तरह की लैंग्वेज पे लिखी होती है जो कि डिपेंडेंट होता है प्लेटफॉर्म पर. सी लैंग्वेज, whatever code you will write, you have to write it separately for different platforms. If you want the same application on Mac, Android, or Windows, you have to write three different applications. तीन applications लिखनी पड़ेगी. Similarly for C++. So obviously option A is wrong, option B is wrong. ये दोनों तो option wrong हो गए. Now when it comes to C versus D, language is Java. Java is a platform independent language. Now why is Java platform independent language? Java platform independent language क्यों है? Means same code whatever you are writing in Java, same code will run in Mac, same code will run in Windows, same code will run in Android. वही सेम कोड आपका लैपटॉप पे भी चल जाएगा, फोन पे भी चल जाएगा. ऐसा क्यों है? वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा. Because of a concept known as JVM, because of a concept known as byte code. So आप ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. थोड़ा सा समझे व्हाट इज जेवीएम, थोड़ा सा आइडिया. मतलब ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू गो इन वेरी मच डिटेल बट बेसिक आइडिया आज जावा पढ़ने, मतलब मे बी रोड मैप लेने आए हो बट थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो क्या बुराई है. यस. So what is JVM? JVM, the full form first of all is Java Virtual Machine. Let me write it also. Java Virtual Machine. Now, has anyone here listened about the term virtual machine? क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने वर्चुअल मशीन का नाम सुन रखा हो या मे बी एमुलेटर का नाम सुन रखा हो? हैव यू लिसनड अबाउट द टर्म नेम्ड एज एम्यूलेटर? ब्लू स्टैक्स. पुराने जमाने में हम क्या करते थे, सेम एप्लीकेशन जो मोबाइल की है उसको विंडोज पे चलाना है तो एमुलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, या विंडोज की एप्लीकेशन को मे बी मारियो को फोन में चलाना होता था तो एक ब्लू स्टैक्स नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे, या फिर आप बोल सकते हो एक एमुलेटर डाउनलोड करते थे. तो एमुलेटर इज अ वर्चुअल मशीन, काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन ओनली. व्हाट वी प्रोवाइड अ मशीन ऑन टॉप ऑफ एक्चुअल मशीन. हम एक काइंड ऑफ इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं असली मशीन के ऊपर. वी आर नॉट हैविंग अ न्यू मशीन. इफ वी वांट टू रन अ मोबाइल एप्लीकेशन लेट्स से कैंडी क्रश ऑन विंडोज, we can't run it directly but we can run it on Android. So what we will do is we will run Android on Windows, and inside Android the application will run, the you can say the game will run, Candy Crush will run. तो आप क्या करोगे, आप एक नकली मशीन, वर्चुअल मशीन जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती वो क्रिएट करोगे. यू विल क्रिएट अ एनवायरमेंट, a runtime environment inside your actual platform, inside your actual hardware or software, and inside that virtual machine you will run your code. So
Now, can I say that the Candy Crush is also able to run in Windows? वही सेम एप्लीकेशन मेरी विंडोज पे भी चल पा रही है, क्या मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? Using this Android virtual machine, using this emulator. So that same concept or similar concept is used by Java. Java uses Java virtual machine. जो Java virtual machine को use करता है उसका नाम है JVM. So Java code is run on JVM. JVM is a virtual machine inside any platform, and we don't need to care about what is the platform. What will Java do is Java will interact with JVM. JVM will interact with the different environments. इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं. Let's say we are writing the Java code. Java code will interact with the JVM, Java virtual machine. अब हमने तो भाई दलाल को पकड़ लिया. अब अगर हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, हमने दलाल को पकड़ लिया. क्या हमें इससे फर्क पड़ता है कि वो आगे जाके कुछ भी करे? क्या हमें बस ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, हाँ या ना? If we have hired a, you can say, what is dalal in English? If we have hired a broker, then can I say that whatever broker will do internally, we don't care. We will only contact the broker. हमें सिर्फ broker से मतलब है. So that broker, that JVM will interact with Windows. I don't know how it will do it. It will interact with Mac. I don't know how it will do it. It will do it. It will interact with Android. Again, I don't know how it will do it, but it will do it. I only want to interact with JVM. जावा का कोड JVM से इंटरेक्ट करेगा, JVM पर चलेगा. JVM वो वाला कोड अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलवाएगा. इज द बेसिक आइडिया क्लियर नाउ? मीडिएटर, बिल्कुल. व्हाट इज द रोल ऑफ JVM और व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलाओ इस JVM की मदद से. एक और क्वेश्चन पूछूं? शुड आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? तुक्के मार सकते हो, देखो अभी तो हमें पता नहीं आइडिया, तो तुक्के मारो लेकिन आंसर करो, जस्ट आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जावा अ कंपाइल्ड लैंग्वेज? काफी लोगों ने ये लिखा था, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब लिख रहे थे. तो अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट इज जावा अ कंपाइल्ड लैंग्वेज और इज इट अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? ऑप्शंस आर ओनली कंपाइल्ड लैंग्वेज. इट इज ओनली कंपाइल्ड, सिर्फ कंपाइल होती है. अब obviously you don't know what is compiled, what is interpreted, so just pick any option. तुक्का मार दो. Interpreted by JVM. It is only interpreted in one go by interpreter. Versus fourth option, it is both compiled and interpreted. एक ऑप्शन है कि सिर्फ कंपाइल होती है, एक ऑप्शन है इंटरप्रेट होती है लेकिन JVM से, एक ऑप्शन होती है, एक ऑप्शन है इंटरप्रेट होता है लेकिन इंटरप्रेटर से, और एक ऑप्शन है कि दोनों कंपाइल और इंटरप्रेट दोनों होती है. क्या लग रहा है? जावा की खूबियां डिस्कस कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग फीचर्स ऑफ जावा. तो व्हाट डू यू थिंक विल बी बेटर? ओनली कंपाइल्ड, ओनली इंटरप्रेटेड, और बोथ? भाई दोनों चीजें मिल जाए मजे आ जाएंगे. इट विल बी बेटर इफ इट इज सपोर्टिंग बोथ. तो जावा इज a compiled as well as interpreted language. It uses both. It is also doing compilation. It is also doing interpretation. Now let's discuss what is compilation, what is interpretation, or what is compiler, what is interpreter. Let's say I am giving you maybe a student's answer sheet. मैं आपको एक स्टूडेंट की आंसर शीट दे रहा हूँ. There will be a lot of questions in that answer sheet. Question 1 answer, question 2 answer, question 3 answer. Let's say what you will do is you will pick the student with the highest score whose all the answers are correct. आपको एक ऐसा स्टूडेंट चुनना है जिसके सारे आंसर्स करेक्ट हैं. तो what can you do? Can you just basically first see all the questions of first student, are all of them correct? If yes, he is the winner, he is the best student. Otherwise, check for the next student, are all the questions correct? If yes, then okay, good enough. Otherwise, check the answer sheet for third student. If yes, good enough, next student. आप क्या करो, पहले पहले स्टूडेंट के सारे आंसर्स देख लो, सारे करेक्ट हैं तो वही है बेस्ट स्टूडेंट, नहीं तो अगले के देखो, नहीं तो अगले के देखो. इज इट वन वे? You are checking all the questions at once and then checking whether the student is the highest or not. Is he the best student or not? एक तरीका क्या ये है ना? But can I say there is one more way in which I am checking first question one for all the students?
If let's say the student 2 does not answer question 1 in correctly, if he answers it incorrectly, can I remove the student? अगर मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट था जिसने पहला ही क्वेश्चन गलत कर दिया, तो क्या मैं उसे सीधा सीधा रिमूव कर सकता हूँ? भाई ये नहीं हो सकता, बेस्ट ही इज नॉट एबल टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। यस और नो? हाँ या ना चैट में? Now the only two competition are the student one, student three. I will compare among them. Is a student one having question two correct? Yes. Is student three also having question two correct? No. So he's out of the game. Is question three correct by first student? Yes. Is question three uh, correct by student three? But I will not compare it because it is already wrong. So I will compare question by question. This is another way. What was the first way? Find all the answers of one student at a time. एक ही स्टूडेंट के सारे आंसर्स चेक करो. That is done by compiler. ये चीज जो कर रहा है वो कंपाइलर कर रहा है. It will compile the entire code. वो पूरा कोड में देखेगा क्या कोई गलती है. अगर कोई गलती होगी तो वो बोल देगा कि हाँ भाई there is a problem, just correct it. Compiler will search for errors. It will compile the code in one go for the entire code. Whatever error it will face, it will just give you the error इन द एंटायर कोड. पूरे कोड में एक ही बार सारी एरर्स ला कर दे देगा. बट व्हाट विल इंटरप्रेटर डू? इंटरप्रेटर विल चेक योर कोड लाइन बाय लाइन. वो लाइन बाय लाइन आपके कोड को चेक करेगा. इज देयर एनी अदर एरर इन द फर्स्ट लाइन? इफ यस, स्टॉप, यहीं पे रुक जाओ. इफ नॉट, रन दिस, गो टू द नेक्स्ट लाइन. इज देयर एनी एरर? इफ यस, स्टॉप, नॉट, गो टू द नेक्स्ट लाइन. पहली लाइन देखा कोई एरर है, नहीं है, चला दो. दूसरी लाइन देखा कोई एरर है, नहीं है, चला दो. तीसरी लाइन देखा कोई एरर है, नहीं है, चला दो. So both compiler interpreter have some use cases. Both are good. You can't say compiler is always bad. You can't say interpreter is always bad. So what will Java do is Java will use both. Any example why interpreter will be bad? भाई अगर थोड़ा सा आइडिया लगाओ तो इंटरप्रेटर तो अच्छा लग रहा है. इंटरप्रेटर तो एक एक क्वेश्चन देख रहा है, उसको जो भी क्वेश्चन गलत दिख रहा है वो वहीं पे रुक जाता है. Why interpreter should be bad? Why compiler is required? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. अरे क्या बात है, दो दो आंसर्स आ गए. मेरे को तो लगा नहीं था कि ये वाले आंसर कर दोगे. नीरज पाटिल, रवि विष्णु, बोथ आर करेक्ट. कैन आई से इंटरप्रेटर विल टेक मोर टाइम? क्या एक एक क्वेश्चन को चेक करने में उसमें एरर आ गया तो वो करेक्ट करने में, फिर अगले क्वेश्चन पे जाने में, क्या इसमें ज्यादा टाइम लगेगा? इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस. यस नंदिश, interpreter will take long time. That's why Python is a very slow language, because Python is only interpreted language. Python सिर्फ और सिर्फ interpret होती है. Even JavaScript, they are very 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 slow language when compared to C++ or Java. So disadvantage of interpreter is it is very slow. It will run one line at a time. What will compiler do? Entire code it will check at once and give you error. पूरा कोड एक ही बार में देखेगा, जो भी गलतियां होंगी एक ही बार में बता देगा. So compiler is fast. Although compiler also have some disadvantages that since it will check the entire code in once, if you want to have multiple applications, you can't just basically run them simultaneously or whatever. मतलब there are disadvantages with compiler, there are disadvantages with interpreter, there are advantages with both. So we use both in Java. Java दोनों use करता है. Idea? Are you getting some basic of what is compiler, what is interpreter, why Java uses both? थोड़ा बहुत आइडिया लग पा रहा है सबको? Yes. So now let's do what? Let's discuss the next question, which is why is Java secure and robust? तीसरा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है. अगेन तुक्का मारना है. In every question we will get some learning. Why do you think is Java secure and robust? Robust you can say safe. Robust का मतलब safe या फिर efficient, ऐसा कुछ. Why Java is secure and safe? जावा में कोड करना सेफ क्यों है? बिकॉज ऑफ, तुक्के मारो भाई, तुक्के मारो, और जिनको पता है वो आंसर करो. ड्यू टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा इज सिक्योर, इट जनरेट्स बाइट कोड. नो, whoever have answered C option,
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट विल मेक द कोड सिक्योर? एब्सोल्युटली नॉट भाई, इससे कोड सिक्योर हो जाएगा? इसका कोई रिलेशन ही नहीं है भाई। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अलग फीचर है, सिक्योर होना अलग चीज है। इफ यू आर सेइंग मे बी, लेट्स टेक एग्जांपल, let's take any government service. Can I say it will be available in every state, every terrain? Maybe in the mountains, maybe in the, you can say, plain area, maybe in the forest also. आपका जो गवर्नमेंट सर्विसेज होंगी वो हर जगह होंगी। मे बी गवर्नमेंट की बस हर जगह होंगी। कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, माउंटेन हो, प्लेन्स हो, कहीं पे भी हो, गवर्नमेंट की बस हर जगह होगी। बट अ प्राइवेट बस विल ओनली बी इन द सिटीज। बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी सिक्योर, व्हाट विल बी सेफ? कौन सी चीज सेफ है? आर गवर्नमेंट buses safe, or are private buses which are only available in certain locations, which are having AC and everything, Volvo वगैरह, are those safe? Obviously the private buses will be safer than the government buses. भाई government buses में तो कुछ भी हो सकता है। So what we are saying is, it is not related that security will come from platform independent will come from security. No, they are different features. Java is secure not due to C, not due to D also. It is not safe because it is both compiled and interpreted. It is safe due to either presence or absence of pointer. What do you think, are there concepts of pointers in Java? क्या जावा में पॉइंटर नाम की कोई चीज होती है? अब ऑब्वियसली जो पहली बार कोडिंग कर रहे हैं उनको तो नहीं पता होगा। In C++, there is a concept known as pointers, but in Java, there is no concept of pointers. So, answer which is correct is B. Due to no concept of pointers, Java is secure. Java में pointer जैसी कोई चीज नहीं होती। अब इसमें एक थोड़ा सा आइडिया देना हो मेरे को आपको। Can I say all your applications, whichever are running in your computer, is at one time only one application running, or multiple applications are running? एक बारी में आपके कंप्यूटर में क्या एक ही चीज चलती है या बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं? If I ask you about Chrome, along with Chrome, Zoom is also running. For my application, this open board जहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ ये भी चल रहा है। Along with these three applications, there might be some other applications also running in the background. Background में maybe आप बोल सकते हो ये माइक वाइक का स्पीकर वगैरह चल रहा होगा। So there are a lot of applications running together, and if lot of applications are running together, are they sharing the same memory? Are they sharing the same RAM? क्या वो सेम ही मेमोरी में अपना कोड चला रहे होंगे? मतलब सेम ही सीपीयू वगैरह सब कुछ सेम होगा? यस और नो? पर उसी सीपीयू में उसी रैम में कुछ कुछ जगह होगी जहाँ पे वो अपना कोड चला रहे हैं। नाउ व्हाट इफ आई से दैट योर क्रोम is able to access the data present inside your desktop? अगर आपका क्रोम आपके डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ डेटा उठाने लग जाए, इज इट सेफ? और whether the applications in your desktop are directly picking the data from Chrome? आपने कुछ क्रोम से अ, कोई सॉन्ग डाउनलोड किया और डेस्कटॉप ने क्या किया, मतलब आपके विंडोज ने क्या किया, उस सॉन्ग को प्ले कर दिया खुद से? इज इट सेफ, और इट इज एबल टू चेंज द डेटा? ऑब्वियसली नॉट सेफ। दिस यू कैन डू यूजिंग पॉइंटर्स। आप ये चीज कर सकते हो पॉइंटर्स के थ्रू। Within one application, you can access the data of another application using the concept of pointers, which are there in C++. So we have to be very safe when we are writing with pointers, when we are writing C++ code. But when it comes to Java, there is no such way. आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन का डेटा एक्सेस कर ही नहीं सकते। यू कांट एक्सेस एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम योर रेंज। जो भी आपको डेटा मिल रखा है, आपको जो जगह मिल रखी है, आप इसके बाहर का कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो जावा इज सिक्योर, जावा इज रोबस्ट ड्यू टू द बी ऑप्शन विच इज एब्सेंस ऑफ पॉइंटर्स। क्या अभी तक थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है, या फिर मतलब was this session till now knowledgeable, new for you, or did you know everything till now? क्या अब तक जो भी मैंने बोला है कि आपको सब आता था, या कुछ नया सीखने को मिला है थोड़ा बहुत भी? Yes, session is not end. I will open the session for doubts. What I will do is, I will make the chat to everyone. You can just write your questions in everyone. Whatever questions you have not related to Java, I will be happy to answer.
फटाफट जिनको भी कुछ भी पूछना हो चैट में पूछ सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी लिखना हो लिखो। सर जेआरई बता दो। सी, देर इज अ कॉन्सेप्ट known as JDK, then there is a concept known as JRE, then there is a concept known as JVM. JRE full form is Java Runtime Environment, JDK is Java Development Kit. All of these things, Neeraj, once you will actually start learning Java, actually you will start learning OOPS, then you will see what is JRE. Because right now, even if I tell you, you will not be able to get what is the meaning of JRE or why runtime environment is required or what is Node.js, what is JRE. So just for high level doubts, for now, you can just uh, let it be with you. You can start with any course, you can start with any resource, and while going through that resource, you will be able to get the answers. जो भी चीजें जहां से भी पढ़ोगे, वहां से आप उन सारे के आंसर्स पा पाओगे. JIT is just in time compiler. So again, Guddu Kumar, I will suggest you to follow any object oriented programming playlist of Java. You will be able to find a lot of playlist of OOPS in Java on YouTube. In that, JRE will be discussed, JIT will be discussed, JDK will be discussed, JVM will also be discussed. Everything, whichever terms are there related to Java, will be discussed in OOPS playlist. OOPS. Sir, why concepts of pointers are not present? Uh, because it is not secure as you can see, and it is also difficult to code. Pointers का कोड करना काफी मुश्किल होता है. जावा में pointers नहीं है क्योंकि कोड करना आसान है. We are easily able to write the code in Java due to no concept of pointers. अगर आप यही चीज अगर डीएसए आप स्टार्ट करते हो सी प्लस प्लस में, you will face a lot of difficulty. Trust me, when you will start with पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस. आधे लोग तो कोडिंग उस पॉइंट पर ही छोड़ देते हैं क्योंकि सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स आ जाते हैं. तो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, जस्ट फॉर इजीनेस, जस्ट फॉर सिक्योरिटी, जावा ड्रॉप्स pointers concept. Is the core Java with Hibernate, Spring Boot, and SQL enough to get a job? Shrikar, see, only doing the development will not give you the job. I am doing development in Spring Boot. I am doing the development in Hibernate. But I did not get the job due to Spring Boot. I did not get the job due to development. I got the job due to DSA. So to get a job using that technology, whatever technology you are saying, for getting that job, you need to learn a programming language. You need to learn data structures algorithms. You need to solve some problems on various portals. Then once you are done with DSA, you can do development in any tech stack. If you are choosing Spring Boot, you can start with Spring Boot. But the point is, DSA is very much important. If you will not do DSA, you will not be able to crack big companies interviews. You may be able to crack startups, but for big companies, DSA is a must. How much DSA is required to get a decent job? I must say, you might have seen there are a lot of sheets available in YouTube or LinkedIn. So if you will say there will be around 200 to 250 problems if covering all the topics will be sufficient in DSA for getting a job, a decent job. And decent job, I will include the jobs even like Salesforce. Like Salesforce is a decent job. You can check the मतलब, offers and all. You can check the CTC. तो थोड़ा सा मतलब फ्लेक्स ना मारते हुए आपको आइडिया दे देता हूँ व्हाट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर does apart from earning money. He he or she gets like regular outings. Like in every 3 or 4 months, I usually go to Hyderabad, and I also usually like whenever the team meeting is there outside Hyderabad, we usually go there. And along with team meeting, there is also team outings. You can say there will be a drinking party or maybe a food party, something like that, which will be organized. This is one thing. Other thing is, in most companies, you will get an iPhone or you will get the MacBook laptop, the latest laptop. So same ways here. Like you might not know, you might not have an iPhone for you by your money, but what will company do for you is you will get the iPhone for free. Like you can use it for 3 years, 4 years, till whatever time you are in the company. So these are some other features. These are some other good things of cracking a good company, and for that DSA is a must. Okay. Anyways, मैं topic से थोड़ा भटक गया. Sir, for front end developer, how much DSA is required? See, whatever the role is, again मैं बोल रहा हूँ,
चाहे फ्रंट एंड डेवलपर की रोल हो, बैक एंड की रोल हो, मोबाइल डेवलपमेंट रोल हो, या फिर मशीन लर्निंग भी हो, डीएसए तो चाहिए ही चाहिए। अब ये है कि मशीन लर्निंग होगा तो डीएसए थोड़ा सा कम चाहिए होगा, मे बी इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग डीपी ग्राफ प्रॉब्लम, you can just solve the problems till let's say binary search, or till let's say arrays and string servicing sorting. But for front end you will have to go till graphs dp also, मतलब आपको सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे. So for front end, the level of DSA will be same as a backend engineer or as a normal software engineer. Software engineer वो जो कुछ भी कर सकता है. फ्रंट एंड वो जो सिर्फ फ्रंट एंड में जाएगा, जो सिर्फ रिएक्ट करेगा या जो सिर्फ एंगुलर पे जाएगा. सर डीएसए का प्लेलिस्ट, उसको डीएसए का प्लेलिस्ट शेयर कर दो. देखो मैं इन जनरल डीएसए का प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा. सो फॉर दैट गुड्डू कुमार, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन. आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू. मतलब अगर एनीवन वांट्स सम रिसोर्सेज टू लर्न, I can share some resources, but that for that you have to connect with me, because right now we are only discussing roadmap. If you are going to follow a playlist or a YouTube channel or a course, you have to give 100% dedication. आप कोई सा भी कोर्स लेते हो, कोई सी भी यूट्यूब की प्लेलिस्ट फॉलो करते हो, या कोई शीट फॉलो करते हो, तो आपको अपनी तरफ से 100% डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी कि भाई अब शुरू किया तो खत्म करूंगा, वरना कोई फायदा नहीं है. How much advanced Java is required for SD roles? Not required, Manish. I did not do advanced Java before cracking Salesforce. I am doing advanced Java once I am into Salesforce. So you don't need particular development for cracking a role, for a generic role. अगर आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो सिर्फ डीएसए करो और कोई सी भी डेवलपमेंट कर लो. डू एनी डेवलपमेंट, डू मर्न स्टैक, दैट इज द डेवलपमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट. Do mobile development, do ML, AI, data science, anything. But you have to do something along with DSA. Uh, देखो अगर कुछ क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं तो उनको दोबारा भेज दो. इफ सम क्वेश्चंस आई एम मिसिंग, जस्ट सेंड देम अगेन, कॉपी पेस्ट. क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है, स्क्रॉल करते करते कुछ मिस हो जाते हैं. For my LinkedIn profile, I am sharing my LinkedIn profile in the chat. Let me share my LinkedIn profile. और जिनको LinkedIn के बारे में नहीं पता, it is a kind of, you can say, platform for professionals. It is a social media platform for professionals. जैसे आपका इंस्टा होता है, वैसे ही आपका LinkedIn है, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए. यहाँ पे जॉब्स मिलती हैं, रेफरल्स मिलते हैं, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, इवन फाउंडर से कनेक्ट कर सकते हो. This is your first class, sir? No, this is the introductory class, not introductory also. It is a master class, free master class. In paid batches, although I'm not here to promote paid batches, I teach. So I'm been teach. I'm into basically DSA and all since almost 2.5 years. मतलब 2 ढाई साल हो चुके हैं जब से मैं पढ़ा रहा हूँ. सर मुझे आपने डीएसए एंड कोर जावा एंड स्प्रिंग बूट के रिसोर्सेज के लिए गाइड कर देना, क्योंकि मैं सिविल ब्रांच से हूँ और मेरे कॉलेज में सीनियर नहीं थे फर्स्ट बैच में, तो मुझे गाइडेंस चाहिए था. बिल्कुल गुड्डू, डोंट वरी, जस्ट रीच आउट टू मी. आई विल श्योरली शेयर सम रिसोर्सेज विच यू कैन फॉलो. सर आई डोंट हैव दैट मच कमांड ऑन जावा, बट गुड इन जावास्क्रिप्ट मन. सो डीएसए, कैन वी डू प्रैक्टिस इन जावास्क्रिप्ट? See, if you are going to do DSA in JavaScript, you will face a lot of difficulties. It is not due to JavaScript is hard. JavaScript is also easy. But the point is, the entire community which is doing DSA, which is taking DSA lectures, which are available on YouTube, that will be primarily on C++ और Java. जो भी आपको रिसोर्सेज YouTube पे मिलेंगे, कोई कोर्स मिलेगा या कोई आर्टिकल्स मिलेंगे जीएफजी पर, वो सारे के सारे आर्टिकल्स, रिसोर्सेज, नोट्स या प्लेटफॉर्म्स, वो मेनली फोकस करेंगे सी प्लस प्लस या जावा पर, एंड ऑल्सो somewhat of Python. So there are very less platforms, very less resources which you can truly follow to master DSA in JavaScript. So that is the first reason. Second reason is JavaScript is not a compiled language; it is an interpreted language, and also it is having very less features of OOPs. So what I will suggest is don't do DSA in JavaScript due to this fact, because whenever you are going to create maybe a linked list, you have to create it on your own in JavaScript. Whenever you are going to create maybe a hash map, it might be there,
but most probably all the functions which are there in other languages will not be there. तो मतलब जो सहूलियत जो इजी आपको कोडिंग जावा में होगी या सी प्लस प्लस में होगी वो जावा स्क्रिप्ट में नहीं होगी व्हेन इट कम्स टू डीएसए. इज इट क्लियर नीरज? सर वी वांट टू लर्न जावा. Sir, we want to learn Java as our own, or otherwise we want to learn from any institution. I'm not getting the question, Surya. Can you write it again? Sir, how much Java should I know for DSA? How much Java should I know? See, there are some concepts or some syntax which you need to know, Chetan. जैसे कि first syntax will be simple printing statements. After doing printing statements, you have to learn about operators. Then after operators, you have to learn about, you can say, different kind of inputs, how you can take different data type inputs. After learning data types, you have to learn if else, you have to learn loops, and this much is enough when it comes to Java. And also functions. Yeah, functions I missed. These six things is required to start with DSA. Although when you will go in maybe medium to high difficulty questions, you will also have to learn about oops. जब आप थोड़ा सा आगे वाले लेवल पर जाओगे तो आपको oops भी पढ़ना पड़ेगा. मतलब ये शुरू में पढ़ो और डीएसए स्टार्ट कर दो. एंड दिस इज हाउ ऑल द करिकुलम्स ऑफ यूट्यूब और एवरी इंस्टीट्यूशंस आर डिजाइन. मतलब यूजुअली ऐसे ही करते हैं लोग, या फिर ऐसे ही सजेस्ट करते हैं लोग, इवन इंक्लूडिंग मी, कि पहले थोड़ी सी जावा पढ़ी या कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी, उसके थ्रू बेसिक डीएसए पढ़ा, एरेज स्ट्रिंग्स बेसिक डीएसए पढ़ा, एंड देन यूजिंग दैट लर्न एडवांस्ड, यू कैन से ऊप्स कॉन्सेप्ट, एंड देन लर्न एडवांस्ड डीएसए. मतलब बेसिक लैंग्वेज, फिर बेसिक डीएसए, फिर एडवांस लैंग्वेज, और फिर एडवांस डीएसए. दिस इज द वे. Sir, Java is 100% object-oriented programming language. No, it is not 100% pure OOPS. DSA is required for a front-end developer. Uh, yes, I should say it is required for front-end developer. Although you will not be applying DSA that much when you are actually doing development, but for interviews it is required. Whether it is a front-end developer interview, whether it is a back-end, at least one interview round will be based on DSA. कम से कम एक round तो होगा ही होगा जो DSA के ऊपर होगा. Sir, where should I practice DSA lead code hacker rank? Is the DSA same for every programming language? Yes, DSA is same. DSA is the concept. जैसे भाई मान लो आपको फिजिक्स पढ़नी है, तो फिजिक्स आप हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लो, किसी में भी पढ़ लो. वैसे डीएसए पढ़नी है तो सी प्लस प्लस में कर लो, जावा में कर लो, जावा स्क्रिप्ट में कर लो, कैसे भी कर सकते हो. डीएसए विल बी सेम, बट learning DSA or learning that concept will be easier if you choose correct language like C++ or Java or Python. सर डीएसए की प्रैक्टिस कैसे करें? हाउ शुड आई डू प्रैक्टिस? तो एक चीज है, फॉर प्रैक्टिस व्हाट आई कैन शो यू इज आई हैव मेंटेन्ड वन शीट ऑफ प्रॉब्लम्स. ऑल्दो मतलब थोड़ी सी बड़ी शीट है ये, बट आई कैन ऑल्सो शेयर सम स्मॉलर शीट्स. मतलब at least from the sheet you can get the idea that what all questions or what all topics we need to do. First array and string, then we need to do recursion, then we need to do number theory, sorting, binary search, linked list. मतलब there are 10 to 15 topics in total, and this sheet or this list of topics, if you are going to do, you will be also able to crack the top MNCs, the top product based companies. मतलब जो ऊपर से ऊपर लेवल की कंपनी आप सोच सकते हो जहाँ पे एसडी रोल मिलता है, वो भी आप क्रैक कर पाओगे by learning those 10 to 15 topics. Sir, if you have taught DSA in any of the platforms, can you please inform Charan? Charan, like I usually take live classes at Geekster. So if any batch will be there at Geekster, you can check out with the Geekster team. But this is not the right platform right now. Right now, we are discussing in general. This is a free masterclass. Or you can also connect with me personally. सर डीएसए के अलावा और कौन से टॉपिक्स आने चाहिए? सी नीता, व्हेन यू आर डन विद डीएसए, व्हेन यू आर डन विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन पिक एनी डेवलपमेंट, कोई सी भी डेवलपमेंट स्टार्ट करो. यू कैन स्टार्ट विद फ्रंट एंड, you can start with backend, although for backend a little bit of front end will be required. You can start with mobile, you can start with machine learning AI, you can start with anything, but one project should be there. एक प्रोजेक्ट आपके खुद के बनाया हुआ आपके रिज्यूमे में होना चाहिए. How will the attendance be taken? If anyone is from the team, if anyone is from Geekster, can
They share the feedback form in the chat and also the attendance form. Please give us the sheet. देखो जिनको भी वो डीएसए की शीट चाहिए, although it is also available on various platforms, but if you want the same sheet which I used to crack Salesforce, which I prepared on my own, you can connect with me on LinkedIn. I can again share the link for LinkedIn. Although बात ये है कि उस शीट से कर लोगे तो हो जाएगा, कहीं और से करोगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है. You have to follow the same topic and follow in the particular order. If you are following all the questions, topics, if you are solving all easy, medium, hard problems, whatever are required, you will be able to crack it. ठीक है. Uh, Any new questions? As you can see, everyone, there is a feedback form which you can see in the chat section. That feedback form is also not just for the attendance, not just for the certificate, but also that how did you find the today's class? And do you find any improvement? Do you find any, maybe you can say, any suggestions which you can think, which we can implement in the next मास्टर क्लास. मतलब आपको कोई और मास्टर क्लास चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हो. मे बी आई वांट अ मास्टर क्लास ऑन जावास्क्रिप्ट, मे बी आई वांट अ मास्टर क्लास ऑन SQL database. So just put whatever you need or whatever suggestions you have in that feedback form, and also using this feedback form only you will get the attendance and also the certificate. सर लीड कोड पर प्रैक्टिस कैसे करें? नीरज, पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए लीड कोड पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर काफी कम प्रॉब्लम्स हैं जावा या फिर C++ के सिर्फ ऊपर. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, उसके सारे कॉन्सेप्ट सीखो, सारे सिंटैक्स सीखो. उसके बाद जब आप एरेज एंड स्ट्रिंग से स्टार्ट करोगे, फिर लीड कोड पर जाओ प्रॉब्लम सॉल्व करने की. और प्रॉब्लम ऐसे नहीं है रैंडमली पिक कर ली. पहले एरे की प्रॉब्लम पिक करी, 1D एरे, फिर 2D एरे, फिर मैट्रिक्स, फिर आपका स्ट्रिंग, फिर आपके 2 पॉइंटर्स, फिर स्लाइडिंग विंडो. मतलब ऑर्डर में जाना चाहिए. रैंडमली क्वेश्चंस करोगे तो मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, या फिर करोगे भी तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, आगे जाके आपको पता चलेगा. Attendance sheet is the same, which is the feedback form. If you will fill the feedback form, you will get the attendance, and if you will get the attendance, you will get the certificate also. जिनको भी अटेंडेंस चाहिए वो प्लीज ये फीडबैक फॉर्म फिल कर दो, ताकि आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाए. और आपको बेसिकली अगर कोई रिसोर्सेज हमें शेयर करने होंगे, दैट ऑल्सो वी कैन शेयर. ओके, जस्ट letting the session remain for 5 more minutes. Any queries for the last 5 minutes? Anyone want to ask? I am here. Then we will end the session. किसी को कुछ भी पूछना हो लास्ट के 5 मिनट. जावा, हाउ टू इम्प्रूव. सक्षम, देखो, if you want to improve in Java, what you can do is don't focus on uh, just directly jumping onto DSA. Give at least 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks on Java. कम से कम 1 महीना तो मेरे अकॉर्डिंग देना चाहिए सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने पे. And when it comes to learning programming language, what is the best way to learn programming language? There are a set of problems known as patterns. एक patterns नाम की category होती है. In that patterns, what will happen is you will be printing different kind of beautiful drawings. You will be printing a triangle. आप एक triangle print कर रहे होगे. You will be printing maybe a rectangle. You will be printing a diamond. अलग अलग तरह के patterns print करोगे. When you will be printing those patterns, there are a list of 20 to 30 patterns. You will get the concept of if else, you will get the concept of loops, you will get the concept of function, operator, everything using the patterns only. तो एक patterns practice करो, उसी से आपकी mostly 90% Java आपकी सुधर जाएगी. And if you want to again get the list of most famous patterns, either you can do a Google search or you can ping me on LinkedIn. I will be happy to share list of 20 to 30 patterns which are famous. 20 से 30 पैटर्न्स ही हैं जो करने होते हैं. मतलब 20 problems or 30 problems you need to solve, and you will be able to do entire Java.
सर डू डीएसए, सर डीएसए सीट के लिए लिंक्डइन पे मैसेज करना है। हाँ, इफ यू वांट टू गेट एनी रिसोर्सेज यू कैन पिंग मी। सर Munstack, देखो पिंकू परमार, although I am not doing Munstack or I have not done Munstack in depth, although I tried it, so I don't think I will be a good person to give you suggestion on Mun. But for Munstack in general, if you are asking about how to follow it, I will suggest first do front end. First, not go into React. That is the R in Mun. फर्स्ट ओनली डू वनीला जावास्क्रिप्ट, मतलब सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये तीन चीजें करो। डोंट टच एनी फ्रेमवर्क, डोंट टच एनी लाइब्रेरी, प्लेन जावास्क्रिप्ट you have to write. It will take 1 month or 2 months. Once you are good with the plain JavaScript, what you have to do is then maybe learn React, or then maybe go to the backend. And back in the backend, you will have the database, that is Mongo. You will have the Express and Node. So in this structure, in this you can say path, if you will start with Monstack, you will be able to learn it easily or learn it in a better fashion. भाई राम राम क्या लिख रहे हो? राम राम भाई सारे ने। Okay, so I think what we can do now is just I am sharing one link. What you can do is you can maybe, if someone was asking that where I can be basically finding all the resources or everything. One resource is obviously Geekster, where you are right now. So what you can do is you can just follow this resource also, although it will be a paid resource, but those who are willing to get a structured fashion course or those who want to learn from me, I will be available at this platform. So you can go through the courses. I am not trying to sell anything, but it is just your opinion or your, you can say, choice. If you want to buy a paid course, surely you can basically learn from Geekster. So, anyways, even if you don't want to learn from a paid resource, what you can do is you can just sign in and you will be getting similar master classes, similar short courses. There are a lot of short courses also available which are completely free. Sir, where to learn OOPS concepts? For OOPS, you can follow a book. The book name which I suggest, I will not suggest any website or something, because if you will go to Geek for Geek, it will be a hell lot of articles. मतलब 100-200 articles सिर्फ OOPS पे मिल जाएंगे आपको. There is a book named as Head First Java. Just follow this book. You will be able to complete this book, not entirely, but the important chapters in just 2 days. मतलब इतनी मजेदार होगी ना ये बुक, स्टोरी की फॉर्म में दे रखी है. You will be able to complete it in 2 days, and entire OOPS can be learned from that book in Java. और आपको इसकी PDF इजिली मतलब गूगल करोगे तो मिल जाएगी. Can we get a roadmap for Java? Uh, Today, Sushant, what we discussed, that was a roadmap for Java only. If you want particular resources, that what you can follow. For that, I have told you that you can like ping me. But I have discussed what are the features of Java, what are the applications of Java, where is Java used, or if we want to pick Java, what other things we need to learn to become a software engineer. And when it comes to Java development, then you can maybe request for another session where we can discuss about what to do in advanced Java, what to do in Spring Boot, what to do in Hibernate and all. Sir, how you improved your logic building? By solving more and more problems. Simple answer. जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना लॉजिक बिल्डिंग आसान होगी. भाई आप पहले दिन स्कूटी चलाओगे, 1-2 बार गिरोगे, दूसरे दिन चलाओगे, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो. एक हफ्ते बाद मतलब एक हफ्ते तक चलाते रहोगे, फिर आप अपने आप में देखोगे कि यार आप अब बैलेंस कर पा रहे हो. तो 1 महीने तक चलाओगे तो देखोगे यार मैं मतलब हाईवे पे भी चला पा रहा हूँ. तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. इट इज जस्ट मैटर ऑफ हाउ मेनी कॉन्सेप्ट यू आर लर्निंग, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स यू आर सॉल्विंग. I am sharing the LinkedIn ID again, although you first have to connect, you first have to make a ID if you don't have. पहले आपको एक खुद की आईडी बनानी पड़ेगी, उसके बाद मेरे को एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, and then you will be able to chat with me. Okay, then how was the session? Just ending note. How was the session?
डू यू वांट मोर सच सेशंस? क्या इस तरह के और भी सेशंस आपको चाहिए? Yes, not just from me, but there will be other persons who will be coming. Great. So let's do what? Let's end the session right now, and we will meet with a new session with a new host also. Till then, bye bye. Take care.